A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My name is Irfan Ahmed. I am an energy consultant, and it is my pleasant duty to take you through the program today. We, the organizing team, are pleased to welcome all the distinguished guests, participants, international delegates, strategic partners, print and electronic media, to the 3rd International Solar Clean Energy Pakistan Conference 2023. Ladies and gentlemen, this 3rd International Clean Solar Conference and Exhibition is supported by the Government of Sindh and Alternative Energy Development Board. The event is sponsored by Goodwi, Sungrow, Act Engineering, Divan International Private Limited, Albario Engineering, EFU General Insurance, Wateen Energy, Sindh Transmission and Dispatch Company, Mizol Solar, Adaptive Technologies, Interface Engineering and Construction, and Lee and Power. So in the Energy Update magazine is the organizer of today's annual event, and this event is managed by Publicity Channel. So we thank everybody who has helped us in supporting this very important event, which has a major theme to discuss for the whole day, and that is the sustainability of energy in Pakistan. This is a very important topic because energy is required in all the ways of life. Wherever you are, energy is required these days. And its sustainability, which has been a question mark in Pakistan, has to be maintained somehow. Now we'll have interesting addresses and presentations on this topic, as well as there will be a panel discussion. And this panel discussion will talk about whether we require a change in policy or not. Policies which we have been following for the last 15 years and which have led us to this day, where we feel that our energy is not sustainable and neither it is affordable. I can give you one example. We have in Pakistan, the potential is 2200 gigawatts alone of solar. The solar potential is 2200 gigawatts, and what we have installed in the last 15 years is less than 1 gigawatt. So there must be something wrong with our policies that we have not been able to utilize this blessing of God. So I think let's start with the program, and we will, as we go along, we'll have discussion on this topic. So I would first like to invite, our first speaker would be Mr. Naeem Memon, who is Director at Alternative Energy Development Board. And let's hear what he has to say. Mr. Naeem Memon was involved for a number of years with wind energy, and for the last 2-3 years, he is now responsible for the solar energy in the Alternative Energy Development Board. Thank you very much, Excellency, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. I am Naeem Memon, Director Solar, Alternative Energy Development Board. I'm working with the board since 2006. Sir knows me very well. We joined him actually when he was the secretary of the board in 2006. So it's been 17 years working with the board. As Irfan Saab said that earlier, I used to work in the wind section, but for the last 4 years, I am working as Director Solar.
I will do a presentation here, just explaining the renewable energy sector of Pakistan. The current scenario, just to give you a snapshot, actually we are a population of 225 million people, and even now 12% people are unelectrified. The per capita consumption, actually we are one of the lowest in the world. Actually the world average is 3,000 and we are at 550 kilowatt. So there's a lot more to do in it, and there's a future investments in it also. The government's target is to achieve 100% access of electricity by 2030 under the SDG goal, SDG 7. The projected demand in IGSAP assumed as 4.3% per year. So it makes around average of 3,500 megawatt per year. There's a push now towards reducing the reliance on imported fossil fuels. Actually, I will explain in my next slides that how we are going to do that. And then, as per the new policies, actually we are encouraging people to utilize the renewable energy resources for self-generation through net metering, distributed generation, and microgrids. This is the power sector overview. We have installed a capacity of 45 gigawatts at present. By 2023, actually, we will have this one. Around 17.3 gigawatts is in the public sector, whereas the private sector has 27.5. So in total, we have 45 gigawatts, out of which hydro is around 24%, gas and RLNG is around 30%. Oil and coal are 16%, nuclear 8%, and renewable energy at present we have 6.51% in the national mix. But this is the transition actually. This is how we are planning to transit from the shift from the fossils to the renewables actually. At present we have integration of 31% of renewable into our energy mix, and we want to achieve 62% of our energy mix by 2031. There will be installation of 17 gigawatts in it, and mostly it will come from the renewable resources. The solar at present we have 2%, and we like to increase it to the 19% solar. Wind is at present we have 4%, and it will be increased by 6% and will make 10% by 2031. So hydro is around 24%, and we want to make it to 33%. So in total 62% by 2031. And then you can see here that the imported coal at present we have 10%, it will be reduced to 7%. The furnace oil from 16% to 2% only. The RLNG that we are using is 22%, and it will be around 13%. So this is the transition. And for that we have the National Electricity Policy. The policy objectives or guiding principles are the universal access, number one. Number two, the sustainable, self-sustainable power, the energy security. We are focusing on energy security with the best utilization of the indigenous resources and through the integrated approach that we do through the IGSAP and through the bidding, efficient bidding, and to get the affordable power for the people. We have actually ARE policy in field, which is the subset of the NEP 2021, and then we have recently approved, the government of Pakistan recently approved the framework guidelines for the fast-track deployment of solar. So again here, for the ARE policy, the IGSAP outputs, the integrated approach, will form the basis for all the procurements. The development of ARE projects will be primarily through the competitive bidding. The unsolicited mode is also there, but it's limited to only G2G projects and the new technology projects. We also promote
the non-utility procurements through captive, B2B, and through mini-grids. As I said, that Government of Pakistan has recently approved the framework guidelines. This initiative has main three areas. Number one is substitution of expensive imported fossil fuel with the solar PV generation. So under this initiative, we are planning to install around 6,000 megawatts near to the expensive fossil fuel plants in the close vicinity of those, and trying to use the grid infrastructure of those plants. And the second initiative is solar PV generation on 11 kV feeders. Under this initiative, we will be installing 1 to 4 megawatt plants at 11 kV, and for that 1,700 feeders have been identified for that, and the distribution companies will do the competitive bidding for that, and we have developed the RFP. AEDB has developed the RFP for that, and the respective distribution companies are taking it forward, and they have submitted the same to NEPRA for determination of tariff. The third one is the solarization of public buildings. Under this initiative, we are planning to install around 1,000 megawatt of solar PV systems, net metering solar PV systems on the public buildings. So in total, it will be 10,000 megawatts of solar. Under the substitution scheme, these are the salient features actually. Through the competitive bidding, it will be done. It is a straight line tariff. It will have the straight line tariff through the single stage 2 envelope bidding. 70% indexation on tariff on quarterly basis is there. Government of Pakistan will be the purchaser for 25 years. The concession period will be 25 years, and the project will be developed on the built on operate and transfer basis. Government of Pakistan will provide the land for this, and the off-take responsibility is also on the Government of Pakistan. So NTDC will lay the lines for that. Government of Pakistan will provide exemptions on all imported related duties and taxes. In addition, GOP guarantee will be there for these projects, as we do. Only 15% income tax on profit and gains of IPP. I mean, at present under the law, it's 29%. COD will be within 20 months of the signing of the energy purchase agreements. It's a very tight timeline, but under the initiative, we are envisaging that this can be achieved. For foreign exchange requirements for installation of projects, it has to be arranged from foreign sources or from the abroad actually. So in total, as I already said, that it's an initiative of 6,000 megawatts for fuel substitution. And this is the potential, as Irfan Saab was mentioning, that for solar we have around 2,000 gigawatts. And guess what? We have not installed 0.5% of that actually. We are at present, hardly we have installed 5 gigawatts in utility scale, in net metering, behind the meters, or even the off-grid. Not more than that actually. So there's a lot more potential available in solar. The wind potential is around 100 gigawatts. We have one big corridor here in Sindh. We call it Gharu-Kheti Madar Wind Corridor, and then we have several corridors in Balochistan, especially the Chagi area. And then we have a potential of hydro 60 gigawatts, the biomass is 2 gigawatts, and waste to energy is 0.5. That's the wind map of Pakistan. Now the investment opportunities that we have recently. These are the recent projects that we have identified. 600 megawatt at Kot Adu, Muzaffargarh through the competitive bidding, and then 600 megawatt at Jhang, 1200 megawatt at Laya, 50 megawatt
in Manchand, and another 500 megawatt wind and 2,500 megawatt solar will be procured through category 3. So in total, these will be 5,500 megawatt of projects for investment. This is the future edition. As I said, I mean, it's all synced with the policies. So the IGCEP annually says that 13,000 megawatt will be installed through renewables from solar and wind alone. And the solar will have around 8.5 gigawatts and wind will be 4.5 gigawatts. So this is the capacity addition, and these are the opportunities available for the investment in Pakistan in the renewable energy sector. With this, I thank you very much for listening to me. Thank you very much, sir. Well, Mr. Naeem Memon touched some very important issues in his address. Recently, that is on 14th of July, NEPRA has issued a notification regarding the determination of power purchase price for discos. Solar with 15 rupees per kilowatt hour, I think is the cheapest. Although this hydel price is around 7 rupees per kilowatt hour, but it has got some hidden costs which have not been included. And then the gas at 13 rupees per kilowatt hour is also to be made a little bit more expensive, an IMF condition on us to increase its price by 50%. So gas would be around 20 rupees. So solar with 15 rupees is the cheapest, I think. But we have only 1.8% solar in the energy mix. So that's our issue. The cheapest has the least contribution towards our energy mix. Well, this is some point which will be discussed, I think, during the day. And now it's time to call for the next speaker. And our next speaker would be Mr. Syed Salman Mohyuddin, Country Manager, Good V. Mr. Salman, please. Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable guest of honor, designers, respected dignitaries, distinguished guests, attendants, audience, my friends and colleagues from renewable energy, Assalamu alaikum. Before getting started formally with my presentation, I would like to congratulate Energy Update for organizing this event, Third International Solar Conference and Exhibition. Despite of the challenges the stakeholders are having during the course, and I would also like to acknowledge and appreciate the very fact that they have been circulating their monthly magazine, and through which they have been able to promote and highlight about the products, services, challenges to the stakeholders and public at large as well. So with that, I would like to run down through my presentation, which includes the company introduction, products and services we have been offering in Pakistan and globally as well. GoodV, as we all know, is a leading supplier of solar inverter. We are a manufacturer of solar inverter, complete range ranging from including on-grid, hybrid, residential, CNI, and up to utility segments. The company started working back in 2008, and it was a private limited company initially when it was established, and during a very meager period of 10 years, we are now a public listed company in China, and with the global presence in different part of the world like Australia, US and all. And back in 2018, we have also had partnership with GE. So GE is also sort of manufacturing GoodV products for Americas and beyond. We have our own warehouses globally. The largest warehouse outside of China is in Australia, then it is in America, in the USA. These are the awards which we have been bestowed upon as so far in different places globally. The latest and I think the topmost is like
in the Bloomberg 2021, we were ranked the most financially stable company in the PV segment, in the solar segment. Our production capacity has increased up to 35 gigawatt now, and we have been able to, the battery capacity is 2.1 gigawatt hour as yet. This is what we have already installed, 52 gigawatt around the globe. Major installations are in Europe and Asia. This is a market share, the real market share globally, and we are a major player in Asia, specifically in India and the Far East countries as well. These are the warehouses, the actual warehouses, where we also have our products, complete range of products presence. And very recently we have also started EV chargers and PIBV, that is building integrated PV panels. This is our whole portfolio. Like I've already mentioned, it includes the residential inverters, it includes CNI, the mid-range inverters, and we also have utility segment inverters. And we also have building integrated PV panels. We also have battery for the hybrid inverters and EV chargers. And the range from of the inverters are from 0.7 kilowatt, that's 700 watt, up to 250 kilowatt string inverter. This is what it is, a residential complete solution with building integrated PV panel. Then we have our own solar inverter. Then we have our own energy storage system. We have our own meters. And then we have our own EV charger as well. So this is it, almost everything which basic house would need. We provide each and everything, a turnkey solution. This is our on-grid segment, residential one, 0.7 to 20 kilowatt. The range is in the different segments like 0.7, 1, 2, 3, 5, 8, 10, and so on and so forth. These are the energy storage systems. We have, for our storage hybrid inverters, we have different ranges of low voltage and high voltage both. We have, in the single phase, we have ES series. Then for high voltage, we have EH series. And for ET, this is three-phase high voltage segment, which is ranked continuously for the last 5 years. We have ranked among top 3 globally and specifically in UPD. This is what it is, most efficient AC inverter for 2023 as well. Specifically, the certifications are mentioned, and specifically they are ET 10 kilowatt and EH 5 kilowatt, which is not only applicable globally but also in Pakistan as well. Our distributors do keep these inverters here in stock, and they are sold and installed in Pakistan as well. We do have a wide, strong customer base here, already installed 5 and 10 kilowatts of ET. This is a complete storage system, ESA, which sort of a cabinet. It includes inverter and battery storage already. We have lithium-ion batteries, and there's a wide range of lithium-ion batteries. It's not necessary that you only have to install GoodV batteries along with it. It's compatible with quite a range of batteries, including Pylon and all other batteries as well. However, we also provide our lithium batteries along with the system, if need be. Like I mentioned, we do have our EV chargers, like the hybrid and the EV market being developed here. We already manufacture and we can supply EV chargers in Pakistan as well. Like I mentioned that we also provide building integrated PV panels. They are very efficient. We can discuss about it as we are also exhibitors here. After the conference, maybe we can have a word about it as well in detail. These are the residential projects which we have accomplished in Pakistan and outside of Pakistan as well. I'm pretty sure that quite a few of you have already seen GoodV inverters in residential and CI segment. Our distributors have been selling it for last 8 years already, and they have been installed in various places, residentially and commercially as well. This is exactly that we have our inverter, and it can be connected to
any tier 1 or known panels, and then it can be connected to the smart meters, the home kits, and then the output can be gauged and it can be transferred to the energy meters of K-Electric and for export devices, so that export can be controlled. For commercial industrial segment, we have from 25 to 120 kilowatt. This is again low voltage. These are the CNI projects which we have accomplished. The recent one is here in Pakistan. We have executed is Gambut Hospital, where they have installed Kudvi. Then there are many other industrial projects as well. As far as if we remember the projects here in Sindh, it's the solarization of schools and hospitals, where they are installing Kudvi continuously for the last few years. And the HT series, which is the utility segment, the string inverter, which has 225 and 250 kilowatt. And the significance is that around 60 HTs can be installed directly to one smart meter. That means up to 15 megawatt can be connected to single meter, single control device. This is the cabinet section. And these are the utility projects which we have accomplished and executed. Digitalization of power plants is also something which we are also executing. And each and every device can be connected through one app or one system, and it can be controlled very easily. You can not only just monitor, you can control the your parameters. Even very remotely, the firmware can also be updated. So it's pretty much the up-to-date digital model, where you don't have to be present all the time in front of the inverters to control it. You can control it remotely through a single app on your mobile phone. All you need is a simple connectivity. Ladies and gentlemen, we are lucky and we are honored that we have His Excellency Mr. Bakhit Atiq Al-Rahmati, Consul General of United Arab Emirates, here with us today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, my name is Bakhit Al-Rahmati. I spent 24 years in Pakistan. I do speak your language, or I will try to speak Urdu. जाके मैसेज अच्छाई पे पहुँचेंगे सबके पास. यूएई पाकिस्तान का सच्चा दोस्त है. यूएई पाकिस्तान का हमेशा साथ दे रहा है. वजह क्या को आप लोगों ने पहले हम लोग को साथ दिया, आप लोगों ने स्टार्ट किया, आप लोगों ने हम लोग को स्टार्टिंग में जो हमारा एमिरेट एयरलाइन, जो हमारा मतलब इंजीनियरिंग में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने साथ दिया. ज़ाहिर हम लोग भी आप लोग को हमेशा इंशाअल्लाह, जो हम लोगों ने जो यूएई का बानी है, अल्लाह जन्नत नसीब दे, मग़फ़ूर शेख ज़ायद बिन सुल्तान आल नहयान, वो उनकी क्लियर इंस्ट्रक्शन था इनके बेटों के लिए, जो आज इनकी सदर है, इज़्ज़त माब शेख मोहम्मद बिन ज़ायद आल नहयान, और इज़्ज़त माब शेख मोहम्मद बिन राशिद नायब सदर ऑफ यूएई, और इज़्ज़त माब शेख मंसूर बिन ज़ायद नायब सदर ऑफ यूएई. इनके क्लियर इंस्ट्रक्शन है पाकिस्तान के साथ हर शुबे में ताउन भी करना है, और हर तरह जो पाकिस्तान का मफाद के लिए और बिलखुसूस आपकी आवाम के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा तवज्जो कर रहे थे. इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी और तालीम का शुबा है और हेल्थ का शुबा है. ये मोस्ट फोकस कर रहे थे हम लोग काफ़ी सालों से, जो शेख ज़ायद मरहूम ने और इनके बेटों ने कंटिन्यू कर रहे हैं. जो पाकिस्तान का साथ जो मैं देख रहा हूँ, जो हमारा इतना 24 ईयर्स पाकिस्तान में, मैं भी अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान हर जगह में मैंने विज़िट किया, और पंजाब भी है और अबर एरिया भी है.
जो 2005-2007 जो आपकी earthquake हुआ था, इसमें बहुत प्रॉब्लम भी हुआ। 2010 जो आपकी सैलाब का काफ़ी नुकसान सिंध में था उस वक्त, और पिछले साल जो भी हुआ बलूचिस्तान, सिंध और अबर एरिया और पंजाब में। मैं ये चाहता था जो आपकी माशाल्लाह इतने इन्वेस्टमेंट कंपनियों में पाकिस्तान में, इनको भी इसी जगहों में तवज्जो देना है, इसी जगहों में थोड़ा सा शेयर भी करना है। आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी जैसा एक मिसाल आपकी नहरें, क्या वजह इनकी मतलब सैलाब हो रहा, इनकी जो ब्रिज बने हुए इनके ऊपर, वो वाकई ब्रिज, वो क्यों हम लोग अपना पानी को रोक रहे हैं? को पानी का रोकने की वजह सबसे ज़्यादा सैलाब आपका एरिया में इफ़ेक्ट कर लेगा। इसमें हम लोग एनर्जी भी फ़ायदा भी उठाए हुए, डैम्स बना दें, सिंध में हैं, पंजाब में हैं, अबर एरिया में है, बलूचिस्तान में है, और अल्लाह ने पाकिस्तान को ऐसा जगह दिया हुआ है, हर चीज़ इसमें है, हर चीज़ जो मैं सोच से बाहर है। मतलब जो आपकी जो क्लीन एनर्जी के लिए ना, मैं बोला दुनिया से सबसे जगह अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो पाकिस्तान में है। आपके पहाड़ों में, आपके ये जो साहली इलाका है, आपकी जो अंदरूनी सिंध में है, मतलब हर जगह है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट चाहिए, तवज्जो देना चाहिए। मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान हम लोग के लिए बहुत अच्छा मुल्क है। पाकिस्तान में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप लोग ज़रा तवज्जो दो। तालीम अपने बच्चों का, सोलर एनर्जी में तालीम दो, इनको प्रमोट कर लो बचपन में। अभी तक मैं एक मिसाल देख रहा हूँ, मतलब जैसे 17 साल या 20 साल इदारा है, वो उस वक्त अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना बच्चों में, अपना तालीम में, इसी में तालीम दो, इसी में तवज्जो दो, जाके बच्चे अगर 17 साल या 20 साल का बाद यही आप मुल्क का काम आएंगे, को बाहर से कोई नहीं आएगा। अपने बच्चे को तालीम देने ज़रूरी है, और इंस्ट्रक्शन होने चाहिए लोकल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट में, अपना हर यूनिवर्सिटी में ज़रूरी इसी में फोकस कर ले, और इनकी शर्तें डाल लें। जाके कोई भी यूनिवर्सिटी अप्रूव नहीं होएगी जब तक पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए ऐसा ही मतलब कोर्सेस होने चाहिए जो अपने मुल्क का मफाद। ज़ाहिर क्लीन एनर्जी का ज़रूरत है, इसी में फ़ोकस करना। मैं नहीं करूँगा या आप अकेले नहीं करोगे, सब मिल के करना चाहिए। और आखिरी जो विज़िट अभी हमारा प्रेसिडेंट COP 28 का डॉक्टर इज़्ज़त माब सुल्तान अल जाबर, वो वादा किया पाकिस्तान को, वो इनका विज़िट था इस्लामाबाद के बाद, वो सक्कर आना था, सक्कर से हम लोग उनको विज़िट कर रहे थे जिधर इफेक्टेड एरिया, लेकिन इनकी इतने मीटिंग हुए इस्लामाबाद में, वो आ नहीं सका सक्कर में। इंशाल्लाह नेक्स्ट विज़िट तो आएगा ज़रूर। वो प्रॉमिस भी किया पाकिस्तान को, हम लोग उनको साथ देंगे। और मैं ये चाहता था, ये तो COP 28 UAE में हो रहा, इसमें फ़ायदा उठाए हुए हम लोग को। पाकिस्तान के अंदर जो काफ़ी जो प्रॉब्लम आए हुए, इसी वजह का सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को इफ़ेक्ट हुआ। तो जितने भी मुल्क उधर आएंगे, ज़ाहिर इनके पास फ़ंड है जो इस चीज़ के लिए जो हेल्प कर ले, और पाकिस्तान का एक मुल्क है जिससे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो आपकी बिज़नेस कम्युनिटी है, जो लोग इन्वॉल्व इसमें भी है, या आपकी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट, ये COP 28 के इसमें फ़ोकस ज़रूर करना है, और इससे फ़ायदा उठाना है, फ़ायदा उठाना अपना मुल्क का किसी तरह। इस COP 28 को छोड़ना नहीं। क्यों? UAE के अंदर जो UAE आपकी समझो आपकी सेकंड होम है, समझो वो आपका साथ देंगे, सिर्फ आप लोग का इशारा होना चाहिए उसी मीटिंग के अंदर है। फोकस ज़रूर करना है। और हमेशा मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को हिफाजत में रख के, और पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीम ख़ान यहाँ मौजूद हैं, सेक्रेटरी थे अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड के। स्टार्ट इन्होंने किया था, सोलर के माहिरीन में से हैं, 2 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर रह चुके हैं। मैं उनको दावत दूंगा कि तशरीफ़ लाएं। सन 2000 में जब मैंने विंड कॉरिडोर की आइडेंटिफिकेशन की और यहाँ हुकूमत को बताया कि 50,000 मेगावाट की कैपेसिटी है,
तो उन्होंने कहा आप जीरो निकाल दें, हम आपकी बात मान लेंगे, 5000 मेगावाट तक ठीक है। 50,000 मेगावाट तो हाइड्रो पावर का पोटेंशियल नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल के विंड का पोटेंशियल 50,000 मेगावाट है इन दिस घारो केटी बंदर कॉरिडोर? हम पाकिस्तानी की बात समझते ही नहीं। कैसे एक पाकिस्तानी कह सकता है जनाब इतना बड़ा विंड कॉरिडोर, जब तक गोरे ने नहीं कहा हुआ। तो अभी भी सारे मैप जो दिखाए जाते हैं वो गोरे के दिखाए जाते हैं। हम इतने ज़हनी तौर पे उस गुलाम हैं कि हम वो पाकिस्तानी का काम नहीं दिखाएंगे जिसने 2000 में कहा था ये विंड कॉरिडोर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरम हमारे इम्तियाज़ शेख साहब का, जो कि मिनिस्टर एनर्जी हैं सिंध गवर्नमेंट में और बहुत डायनेमिक और एनर्जेटिक मिनिस्टर हैं। सेक्रेटरी साहब अबू बकर अहमद मदनी साहब, हिज एक्सीलेंसी कौंसल जनरल UAE मिस्टर बखीत अतीक अल रहमती, मिस्टर सलमान मोहिउद्दीन, मिस्टर नईम मेमन, इरफान अहमद साहब, डॉक्टर बारी, अफशान रुबाब साहिबा, ब्रिगेडियर लाखेर साहब, डॉक्टर नसीम, सीमा ताहिर साहिबा, जैगम रिजवी साहब, सोहेब आसिफ सिफरा साहब और दीगर तमाम जितने भी हमारे आज के यहाँ डिस्टिंग्विश गेस्ट और स्पीकर्स आए हैं। और मैं अपने स्पॉन्सर्स का उनका बहुत शुक्रिया जो है वो अदा करूँगा कि वो इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाया। स्पेशली आई एम रियली थैंकफुल टू एनर्जी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के उन्होंने हमें जो है ना वो इसमें मतलब काफ़ी टेक्निकल और इसमें सपोर्ट किया। हमेशा हमारे पार्टनर्स होते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये इनके सामने की बात नहीं है, बहरहाल एनर्जी डिपार्टमेंट में पाकिस्तान में सिंध वाहिद सूबा है जिसने सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस दी है गुज़िश्ता 5 साल में। और आई रियली अप्रिशिएट कि आप विंड कॉरिडोर से थरकोल चले जाएं, थरकोल से सोलर पावर की तरफ आ जाएं, सोलर प्रोजेक्ट की तरफ आ जाएं, फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ अगर आप आ जाएं, तो मैं समझता हूं कि इम्तियाज़ शेख साहब ने और उनकी टीम ने जितना काम किया है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिंग है रियली, के मतलब जितना काम सिंध में हुआ है और उसके इंशाल्लाह सोशियो इकोनॉमिक जो इसके रिज़ल्ट्स हैं, उसके जो मतलब इम्पैक्ट है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा और आ रहा है। क्योंकि थर में आप अगर आप देखें तो 1200-1300 लोगों को रोज़गार मिला, आपका इंडिजीनियस कोल इस्तेमाल हो रहा है। और अगर सिंध अगर ये इनिशिएटिव नहीं लेता तो शायद मेरे ख्याल है थर कोल आज ऑन ग्राउंड नहीं होता। इसी तरीके से विंड कॉरिडोर पर ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा जो है ना वो डेवलपमेंट आई। कुछ इश्यूज और चैलेंजेस बहरहाल चलते रहते हैं, लेकिन ये कि बहरहाल सोलर पे काफ़ी डेवलपमेंट सिंध में हो रही है। बहुत सारे प्रोजेक्ट एंग्रो के ताउन से लग रहे हैं, दूसरे और कंपनीज़ के ताउन से लग रहे हैं। सिंध सोलर प्रोजेक्ट जो है वो $100 मिलियन का जो प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक के ताउन से, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। और काफ़ी सारी बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स और मतलब जो है ना मुख्तलिफ इलाके जो है ना वो सोलराइज हो चुके हैं। तो बहरहाल ये कि ये एक अच्छा साइन है, अच्छी डेवलपमेंट है जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि जहाँ पर काम हो रहा है वो मतलब ज़ाहिर है जो इश्यूज़ हैं, मसले मसाइल हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट से हों या सिंध गवर्नमेंट से हों, वो बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये साथ साथ चलेंगे। और मैं अपने स्पॉन्सर्स का ख़ास तौर से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पीकर्स का और हमारे पैनलिस्ट का ख़ास तौर से मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए हैं आज। और इंशाल्लाह ये शाम तक हमारा ये सेशन जारी रहेगा, एग्जीबिशन भी साथ साथ जारी रहेगी और उम्मीद है कि इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नईम कुरैशी साहब, स्टेज पे मौजूद मेरे ब्रदर एक्सलेंसी बखीत कौंसल जनरल UAE और मेरे सामने जो हमारे दोस्त मोअज़्ज़ीन बैठे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज ये सोलर एनर्जी की कॉन्फ्रेंस आज रखी है और ये पहली दफ़ा नहीं है। ये नईम कुरैशी साहब और उनकी जो टीम है, ये मुसलसल 4 साल से मैं वज़ीर हूँ, 5 साल से, तो मुसलसल ये हर साल 2-3 इस तरह के फंक्शन, बल्कि ज़्यादा भी कभी कभार रखते हैं, इस्लामाबाद में भी, कराची में भी। तो इनका बहुत बड़ा रोल है इनके एनर्जी अपडेट का, इनकी टीम का, इनका अपना, जो कि आप पूरा इस सिलसिले को और ख़ास तौर पे एनर्जी इश्यूज़ को हाईलाइट करना और
जो क्लीन एनर्जी के हवाले से आज भी हम कर रहे हैं, इससे पहले भी हम आते रहे, विंड पे भी हमने किए हैं कॉन्फ्रेंसेस, बात की है। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ नईम साहब कि आप इस मेहनत में लगे हुए हैं। तो ये एनर्जी इज़ अ लाइफ लाइन फॉर एनी इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, इसके बगैर गुजारा नहीं है। मतलब एनर्जी समझें कि वो है अपना सांस वाली सूरत हाल है इसकी, कि सांस होगी तो जिस्म चलेगा, ज़िंदगी चलेगी। तो ये एनर्जी आप देखें पाकिस्तान में भी इस वक्त एनर्जी के ही प्रॉब्लम हैं, सर्कुलर डेट हो या महंगी बिजली हो या मतलब तेल का इशू हो, RLNG का इशू हो, सब के सब ये एनर्जी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, एनर्जी के ही इश्यूज़ हैं। अगर इस पर हम काबू पा गए तो समझें कि हम कामयाब हैं। और अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है, और ख़ास तौर पे सिंध में, सिंध इज़ द एनर्जी हब ऑफ पाकिस्तान, सिंध इज़ द एनर्जी सिक्योरिटी प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान। यहाँ कोयला हो, वो कि आजकल कोयले पे बात करना मतलब एक मयूब समझा जाता है, लेकिन कोयला हमारी बुनियादी चीज़ है। विंड, सोलर और जितने भी बाकी हैं उनको बेस लोड चाहिए। तो बेस लोड वो कोयले से मिलता है, तेल से मिलता है, फर्नेस ऑयल से मिलता है, और LNG से मिलता है। तो उसके अलावा आप विंड देख लें, वो भी विंड कॉरिडोर भी पूरे मुल्क में सिंध में इस वक्त मौजूद है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मौजूद है, और कई वहाँ विंड पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, और 15 के करीब यहाँ लगने वाले हैं, उस पर काम हो रहा है। और अब सिंध गवर्नमेंट क्योंकि सेपरा नेपरा की तर्ज पे हमने बनाई है, उसका कानून बन चुका है और उस पर काम जारी है, और बहुत जल्द वो फंक्शनल हो जाएगा, ऑपरेटिव हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ लोकली हम अपना एक सिलसिला शुरू कर देंगे या टैरिफ का, और बाकी रेगुलेशंस जो होती हैं बिजली के हवाले से, वो इंशाल्लाह थोड़े दिनों में शुरू हो जाएंगी। वो फाइनल लॉ बन गया है और वी आर ऑन इट, और वो इस टेन्योर ख़त्म होने से पहले हम उसको ग्राउंड पे लॉन्च करके ही जाएंगे। यही हमारी गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, और इंशाल्लाह फिर आपके साथ होंगे अल्लाह ने चाहा तो। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम किया है। एनर्जी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बहुत ज़्यादा काम किया है। यहाँ सोलर के प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, विंड के प्रोजेक्ट्स हैं। शहर में आप देखें 2600 मेगावाट बिजली इस वक्त नेशनल ग्रिड को, वी आर सप्लाइंग 2600 मेगावाट्स जो कि नेशनल ग्रिड को जा रही है। और उनकी जो अपना रेटिंग है, इट इज़ द लोएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी प्राइस के हवाले से। तो अगर उस पर ही हम ज़्यादा काम करें तब भी हमारा काम मसला हल हो सकता है और हल होगा। लेकिन अभी क्योंकि कोल्स पे रिस्ट्रिक्शंस हैं इंटरनेशनली, इन्वायरमेंटली, तो हम वी आर चेंजिंग इट, वी आर कमिंग टू द हाइड्रोजन, वी आर कमिंग एट कोल गैसिफिकेशन पे हम जा रहे हैं, जहाँ कम से कम इन्वायरमेंटल हैज़र्ड हो, ताकि इंटरनेशनली भी हम उन चीज़ों पे जो मुआहदे हम कर रहे हैं तो वी कैन स्टैंड बाय विद दोस्त। तो यहाँ आज सोलर की कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं बता दूँ कि हम लोगों ने एनर्जी डिपार्टमेंट ने यहाँ बेतहाशा काम किया है, और उस पर काम शुरू है, बल्कि फर्स्ट स्टेज हमने कई सौ जो हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, तकरीबन 233 बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं जो कि हम एनर्जाइज कर चुके हैं, सोलराइज कर चुके हैं। तकरीबन 200-250 के करीब स्कूल्स हैं, प्राइमरी जनरल स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ को हम कर रहे हैं। 37 हॉस्पिटल्स हमने यहाँ पूरी सिंध में, हमने बड़े बड़े अस्पताल जिनकी छतें मुयसर थीं वो वी हैव सोलराइज्ड इट। कराची के तकरीबन तमाम बड़े अस्पताल, सिविल, जिना, कोरंगी, औरंगी, लियाकताबाद हॉस्पिटल, और जितने भी आप नाम ले सकते हैं ले लें। यहाँ हैदराबाद LMCH, सखर, लाड़काना, नवाब शाह, तमाम बड़ी बड़ी अस्पतालें हमने ये वर्ल्ड बैंक की मदद से सोलराइज कर चुके हैं हम लोग। और अभी तकरीबन कोई 40 के करीब बिल्डिंग्स हैं जो कि बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जिसमें सिंध असेंबली है और बाकी जगहों पर भी हम जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जेल हैं, जेल खाना जात हैं, क्योंकि जेलों में बड़ा प्रॉब्लम है लोड शेडिंग का, स्कूलों में, अस्पतालों में। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैज़ टेकन द स्टेप्स फॉर सोलराइजेशन, एंड मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सोलराइजेशन पे काम सिंध गवर्नमेंट में हो रहा है। और यहाँ कानून भी हम पास कर रहे हैं। हमने हाइब्रिड पॉलिसी, पहली सूबा है जहाँ हाइब्रिड पॉलिसी हम दे चुके हैं, जिसमें अगर
सोलर एंड विंड को मिलाकर हम बना सकें, तो वी आर ऑन इट, उस पर भी है। और तकरीबन 400 मेगावाट का बिजनेस टू बिजनेस हमारा MOU साइन हुआ है एंग्रो के साथ, वो B2B है और उसमें कोई ज़रूरत नहीं किसी को किसी से परमिशन लेने की, सिर्फ जो रेगुलेशंस जो कानून हैं उनके मुताबिक अपना कारोबार कर सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है, तकरीबन कोई 120 है या 200 के करीब मेगावाट है, जो अमरेली स्टील्स वाले लगाना चाहते हैं, वो भी B2B है, उस पर भी काम तेज़ी से हो रहा है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स, और सिंध हुकूमत, वो सिंध सूबा वो पहला सूबा है जहाँ वर्ल्ड बैंक के साथ एक प्रोजेक्ट है तकरीबन जिसमें 2 लाख घर जो कि सोलराइज होने हैं देहातों में, ऑफ ग्रिड एरियाज़ में। और उसमें अस्पताल भी उसी से जो मैंने जिक्र किया उसी से ही सोलराइज हुए हैं, बिल्डिंग भी उसी प्रोग्राम के तहत कर रहे हैं। और सोलर पार्क्स लगा रहे हैं हम 400 मेगावाट के, जो कि कराची इलेक्ट्रिक के साथ 350 मेगावाट का है। उसकी भी RFP अखबार में आने वाली होगी या 1-2 दिनों में आ जाएगी, बल्कि आ चुकी है वो भी। और नेपरा के पास फाइनल टैरिफ के लिए वो मौजूद है और थोड़े दिनों में उस पर भी काम ऑन ग्राउंड शुरू हो जाएगा। और 50 मेगावाट हमारा जो इसमें से है वो मांझंद है जगह डिस्ट्रिक्ट जामशोरों में, वहाँ है सोलर पार्क। सोलर पार्क्स हैं, 2 लाख घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, मतलब सोलराइजेशन पे काफ़ी काम हुआ है सिंध गवर्नमेंट में। और सिंध एनर्जी डिपार्टमेंट हैज़ रिमेन वाइब्रेंट डिपार्टमेंट इन दिस। और हमारी 4 फ्रंट पे हम काम करते हैं, क्योंकि विंड भी यहाँ है, सोलर भी यहाँ मौजूद है, कोल भी यहाँ है, ऑयल भी यहाँ है, गैस भी यहाँ है। तो अल्लाह ने जो सूबा सिंध को पाकिस्तान में हैसियत दी है एनर्जी के हवाले से, मैं समझता हूँ किसी सूबे के पास ऐसा नहीं है। और ये पूरे मुल्क का असासा है और पूरे मुल्क की एनर्जी सिक्योरिटी है। और हम तो ये कहते हैं कि इस पर मज़ीद काम होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट शुड कंसंट्रेट ऑन द प्रोविंस ऑफ सिंध, क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और जो लॉज हमने पास किए हैं, जो पॉलिसीज़ हमने दी हैं, जिस तरह मैंने सेपरा का जिक्र किया, इस तरह यहाँ मतलब सीका बना चुके हैं हम, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन के लिए अपना एक इदारा है, जो कि अभी इसी साल उसका भी हमने ऑन ग्राउंड लेकर आए हैं। तो उस पर भी तेज़ी से काम होगा, शुरू होगा। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिंध गवर्नमेंट ने इसमें एनर्जी डिपार्टमेंट में की हैं। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम था कि क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। हालांकि हमारे पास सबसे बड़े ज़खायर दुनिया में 7वें नंबर पर कोल के मौजूद हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि कोल इस वक्त लोग नहीं सुनते, लेकिन कोल और ऑयल के बग़ैर हमारा गुजारा नहीं है। उसको बेस लोड चाहिए, डॉलर्स बचाने हैं। अगर आपने डॉलरों की कमी है मुल्क में, डॉलर्स बचाने हैं, तो मतलब आपको बेस लोड जो कि बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं उसको रिप्लेस करना पड़ेगा लोकल सोर्स ऑफ एनर्जी से, जो थर्कोल की सूरत में मौजूद है। अल्लाह ने हमें वो ख़जाना दिया है। और उस पर मैं ये भी बता दूं कि कोल टू गैसिफिकेशन के लिए सासोल एक कंपनी है, जो कि इदारा है जो कि साउथ अफ्रीका में है, वो गैसिफिकेशन कर रहा है। वहाँ हमने अपने सैंपल्स भिजवा दिए हैं और वहाँ से भी रिपोर्ट आ जाएगी। तो तकरीबन को ये कोयला 11-12 चीज़ों में इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ केमिकल्स बनाने में। तो उस पर अभी हम काम कर रहे हैं। तो एनर्जी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में, उनकी हिदायत पर बहुत तेज़ी से उन्होंने काम किया है इस डिपार्टमेंट ने। और मैं समझता हूँ कि सोलर का जो आज रखा है, ये उस सिलसिले में एक और एडिड हमें एडवांटेज मिलेगा। यहाँ डिस्कशंस जो भी होंगी, जो भी बातचीत होगी, हम उससे भी फ़ायदा उठाएंगे। उस पर भी कोई नई चीज़ें आती हैं जिसमें, तो उसको भी हम देखेंगे। लेकिन अगर कोई यहाँ सोलर की कोई पैनल्स बनाने की कोई फैक्ट्री लगाना चाहे, तो ज़रूर उसका बहुत बड़ा स्कोप है। वी कैन सपोर्ट देम, वी कैन हेल्प देम, लेकिन उस पर कोई आगे नहीं आ रहा। तो उस पर मुझे बड़ा थोड़ा सा हैरत भी होती है कि हम कोशिश करें कि बजाय इंपोर्ट करने के वो हम यहाँ मतलब खुद बनाएं। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए बहुत मौके भी हैं, क्योंकि आइंदा ज़माना आने वाला सोलर का है। यहाँ सोलर ज़्यादा चलेगा। सोलर अल्लाह ने हमें इतनी यहाँ सूरज की शुआएँ दी हैं, सूरज की और हीट वैल्यू भी बहुत है हमारे सिंध में, बाकी जगहों से ज़्यादा है। बलूचिस्तान में कुछ इलाकों में ज़्यादा है, लेकिन
बाकी इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है वो किसी के पास भी नहीं है, जो सिंध गवर्नमेंट के पास है। और मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगा नईम कुरैशी साहब का कि उन्होंने आज मुझे बुलाया इधर, और हम आज यहाँ खड़े हैं सोलर पे। मैं आपको बताया, मैंने आपको, मुझे खुशी हुई कि आपको हमने थोड़ा सा अपना कारकर्दगी जो हमारी डिपार्टमेंट ने की है, सिंध गवर्नमेंट ने की है, वो आपको बताई। और इंशाल्लाह जिस तरह तेज़ी के साथ सोलर पे, विंड पे और एनर्जी के बाकी प्रोजेक्ट्स पे यहाँ काम हो रहा है हाइब्रिड पे, तो वो एक मिसाली है, किसी सूबे में नहीं है। और ये पाकिस्तान के वसाइल हैं, ये पाकिस्तान के रिसोर्सेज हैं, उनको हम पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। और जो डॉलर बचाने हैं, जो मतलब फॉरेन एक्सचेंज सेव करना है, वो भी हम इधर से ही करेंगे, इन्हीं इदारों से करेंगे। तो मैं जो भी इस सिलसिले में मदद की ज़रूरत हो, किसी को असिस्टेंस की ज़रूरत हो, गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज़ ऑलवेज देयर, और वी आर रेडी टू सपोर्ट, वी आर रेडी टू हेल्प। और मेरे पास जो भी आता है मैं सबसे मिलता हूँ, इसलिए कि मेरा काम है मिलना, लोगों की बात सुनना। तो आप लोगों में भी किसी का कोई इशू हो, एनर्जी रिलेटेड हो या अदरवाइज हो, तो यू आर वेलकम। जब भी आना चाहें, जस्ट गिव मी वन कॉल, आई विल बी अवेलेबल। और कोई इशू है तो उसको हम रिजॉल्व करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, सहाफ़ियों का, और जो हमारे यहाँ बैठे हैं पैनल एक्सपर्ट्स, दूसरे लोग बैठे हैं या इस फील्ड में काम करने वाले। और आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिज एक्सलेंसी वहीद who is sitting here and listening to our performance and things like that, which we have been doing in since 5 years. और बाकी सब दोस्तों को भी मैं शुक्रिया, और इंशाल्लाह ये मुलाकातें, ये सिलसिले जारी रहेंगे। और अब हम इलेक्शन में जा रहे हैं, थोड़े अरसे के बाद, तकरीबन महीने डेढ़ के बाद इलेक्शन का माहौल शुरू हो जाएगा, लेकिन हम उस उम्मीद के साथ जा रहे हैं। और अपने अल्लाह से, अपने लोगों से ये उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह फिर भी इधर हम खड़े होंगे। मैं नहीं होगा तो कोई और होगा, और नहीं होगा तो पीपल्स पार्टी का कोई बंदा इधर खड़ा होगा, आपसे बात कर रहा होगा। बहुत शुक्रिया। I would like to thank and in fact congratulate the organizer of this event, Energy Updates, and specifically Mr. Naeem and his team. This is the third event जिसके अंदर हम लोग participate कर रहे हैं, and I must say नईम साहब का role इस industry के अंदर specifically पिछले 3 साल से बड़ा prominent रहा है. We have been seeing him in all the exhibitions throughout Pakistan, let it be in Lahore, let it be in on the north side, not just for solar. इसके अलावा like इनका काफ़ी prominent role है for promoting wind side. So today the topic for my presentation is the Sindh Solar Energy Project. It's a pure public sector project funded by World Bank through the Government of Sindh Energy Department. The targets, as earlier stated, 400 megawatt for one, 50 megawatt for rooftop solar, 200,000 solar home systems in rural areas. And then the last one was the technical assistance. So for this, 3 sites has been selected. One is it in Manjhan, where 250 acres land been allotted in Manjhan for the development of 50 megawatt solar power plant. 612 acres land has been given in district West Karachi Orangi town in Deh Halkani for the development of 175 megawatt with the interconnection through K Electric. And the third one is 600 acres land has been allotted in Deh Mithaghar district Malir.
BESS, battery energy storage, basically a technology that enables power system operators and utilities to store electricity, right? Right now, we have a solar system and we generate and we consume electricity. Battery storage mechanism is not there. जो भी हम generate कर रहे हैं वो साथ साथ consume करते जा रहे हैं. ये एक बहुत बड़ा disadvantage है. मैंने पाकिस्तान गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से जी कैरियर स्टार्ट किया था बैक इन 2006. इंटरेस्टिंगली 18 जुलाई को ही किया था जो आज की डेट है. हम लोगों ने कोल्ड चेन के ऊपर काफ़ी काम किया था जिसमें हम लोग मिल्क चिलर्स इंस्टॉल करके दे रहे थे, बल्क वेंडिंग पे काम किया था, मॉडल फॉर्म्स पे काम किया था. उसके बाद रिन्यूएबल्स इंटरेस्टिंगली डोमेस्टिक बायोगैस सेक्टर के ऊपर काफ़ी काम किया था. अराउंड 2000-3000 प्लांट्स हमने इस्टेब्लिश किए. देन आई जॉइन रियॉन, इट्स कराची बेस्ड कंपनी दाऊद हरकुलिस ग्रुप की, एंग्रोवल. वहाँ पे हमने इनिशली 2011-12 चूँकि रिन्यूएबल एनर्जी स्टार्ट हो रही थी पाकिस्तान में, तो हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे काफ़ी काम किया था एट दैट टाइम. काफ़ी कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स किए थे इन द सेक्टर ऑफ सोलर एंड बायो विद द हेल्प ऑफ UK8, US8 एंड डिफरेंट थिंग्स. एग्री सोल्यूशंस में काफ़ी काम किया. गवर्नमेंट ऑफ KP, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, फेडरल गवर्नमेंट्स के साथ काफ़ी प्रोजेक्ट्स लगाए. देन इन 17 आई जॉइंड स्काई इलेक्ट्रिक एज डायरेक्टर एंड वहाँ पे हमने तकरीबन 5000 प्लस मेनली फोकसिंग ऑन दी डोमेस्टिक साइट हमने काम किया. हमने TSC प्रोग्राम को रन किया. वहाँ पे तकरीबन 2000 सोलर स्पेशलिस्ट हमने प्रोड्यूस किया और मार्केट को सर्व किया. C&I के अंदर हमने 50 मेगावाट प्लस की इंस्टॉलेशंस हमने की थी. लास्ट ईयर मार्च आई जॉइंड वतीन टेलीकॉम एज वाइस प्रेसिडेंट और यहाँ पे हम लोग बेसिकली कुछ एनर्जी डिजिटलाइजेशन पे काम कर रहे हैं एंड हम कुछ IoT बेस्ड सॉल्यूशंस पे वर्कआउट कर रहे हैं और जिसके अंदर हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम आवर जो रेगुलर हमारी EPC सेल्स होती हैं. Thank you, Energy Update, for giving me the opportunity to speak on one of the most attractive business cases in Pakistan, that is solar. Home to 220 million people, Pakistan is the 5th most populous country in the world. Yet 23% of its population remain without electricity. Since last 60 to 65 years, we have been facing the same import bill and the dollar devaluation, PKR devaluation issues, and it's a vicious cycle being going on. The inefficiencies in the power sector have been so grown up that we are just begging to the IMF for a mere of $2 to $3 per annum. And the debt financing would increase further in the coming years. So what is the solution for that? Let's not delve into the stories more, just get the numbers straight because numbers don't lie. Numbers are the most concise and concrete evidence of the past mismanagement from the regulatory side, from the private producer side, from the developer side, and obviously the public government offices also have a very important stake in this. अब मेरे ख्याल में कुछ रेगुलेटरी इश्यूज जो हैं थोड़े और कोई ऐसी चीज़ें जो हम यहाँ टॉपिक में नहीं हैं लेकिन आप समझते हैं कि ज़रूरी हैं, तो मद्दी साहब का फ़ायदा उठाते हुए ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करें कि जिससे उनको भी कोई आइडियाज़ मिलें और हम सबको भी कोई चीज़ और डिस्कस करने का मौका मिले. को पता है कि पाकिस्तान फॉरेन रिजर्व कम होने की वजह से एक प्रॉब्लम और क्राइसिस में है. कुछ सालों पहले हमने एक सोलर, पाकिस्तान के अंदर सोलर इंपोर्ट होता है, आप सबको पता है. कुछ सालों पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट थी, PTI की थी या फिर इससे पहले वाली थी, उसने एक रूल लॉ नाफिज किया कि आप इंपोर्ट करेंगे तो आप प्री इंस्पेक्शन आपकी शिपमेंट की होगी तो इंपोर्ट होगी. तो प्री इंस्पेक्शन से ये होता है कि आपके सोलर पैनल की क्वालिटी और जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक आप होता है तो आपको इंपोर्ट की इजाज़त मिलती है, आपको सर्टिफिकेशन मिलती है डिफरेंट थर्ड पार्टी से. तो कुछ वक्त के लिए तो मुश्किल हो गया था उन लोगों के लिए जो B और C ग्रेड के पैनल्स मार्केट में लेके आ रहे थे. अब मसला यह आ रहा है कहीं 2-3 सालों से, क्योंकि ये पॉलिसी तो अप्लाई हो गई है कि हमें तो ये प्रॉब्लम आ रही है फॉरेन रिज़र्व की, लेकिन हर शिपमेंट पे तकरीबन 1100 से $1200 हम पे करते हैं शिपर को फॉर प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन के. तो
आप देख लें कितनी शिपमेंट्स इंपोर्ट में आ रही है, आप हर शिपमेंट में $1000 से $1200 आप लगा लें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यूसुफ अल्लाहवाला साहब से कि मेसोल सोलर डायरेक्टर मेसोल सोलर कि वो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जैसे सर ने बताया कि सोलर एक बहुत नई फील्ड है और इसमें जो सारे लोग हैं वो भी नए हैं। इसके साथ साथ जो हमें पॉलिसीज़ चाहिए होंगी वो भी नई पॉलिसीज़ चाहिए होंगी और बहुत तेज़ी से हम बहुत सारे फ़ैसले करते हैं, उसके बाद हमें पता चल जाता है वो अच्छे थे या बुरे थे। अगर बुरे होते हैं तो हम उनको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होती है, वो पिछले 3 साल से करानी पड़ रही है और वो इससे पहले नहीं होती थी। और सिर्फ इंस्पेक्शन के हम मद में हर साल $1.5 मिलियन बाहर जाते हैं। हम ऐसा मुल्क हैं जहां फॉरेन रिजर्व्स की कमी है। एक तो ये बहुत बड़ा हमारा पॉइंट है कि सिर्फ अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे मैन्युफैक्चरर से लेना तो ना कभी ओवर वैल्यू होगा ना अंडर वैल्यू होगा। सोलर पैनल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हमेशा गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये ज़ीरो रेटेड है। सोलर पैनल पे 0% टैक्स होता है। इस वजह से जो लोग जूते मंगाते हैं या छालियाँ मंगाते हैं वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आता $200 का है, वो कहते हैं ये 1000 का है, तो उस चक्कर में पाकिस्तान से $1000 बाहर चले जाते हैं। जबकि अगर हम सिर्फ ये कर लें कि स्टेट बैंक के पास इंटरनेशनल रेट हों कि ये प्राइसिंग चल रही है और सिर्फ इन पर्टिकुलर सप्लायर से पाकिस्तान में सोलर पैनल इंपोर्ट हो सकता है, तो इससे ये होगा कि सारा जो प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाएगा। गवर्नमेंट को भी पता होगा क्या प्राइसिंग चल रही है, किस रेट से बाहर जा सकते हैं पैसे। शाफ साहब से ये पूछूंगा कि आप ये बताएं कि नेट मीटरिंग के बारे में जो है क्या ख्याल है, इसलिए कि पाकिस्तान के नेट मीटरिंग के रूल्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उसका फ्यूचर हम सब जो है वो श्योर नहीं है कि वो रहेगा नहीं रहेगा। आपका क्या ख्याल है? बेसिकली नेट मीटरिंग जो है वो 2016 में लॉन्च हुई थी और उसके अंदर पावर जो है वो आप दोबारा यूटिलिटी को बेच सकते हैं एंड यू कैन गेट ए बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो पहले साल में तकरीबन कोई 2 मेगावाट्स के जो है वो नेट मीटरिंग लाइसेंसेस इशू हुए थे नेपरा से, विच इज़ द नेशनल रेगुलेटरी पावर अथॉरिटी। 2022 के एंड पे द नंबर हैड गॉन अप टू 767.5 megawatts, which is approximately a 363.5 times increase. इरफान अहमद साहब ने अपने प्रेजेंटेशन में तकरीबन 1230 मेगावाट सोलर का एक नंबर दिया था 2023 में। तो पिछले साल से नेपरा ने जो है वो 25 किलोवाट्स के अंडर जो इंस्टॉलेशंस हैं उसके अंदर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट ही एलिमिनेट कर दी है। तो आई थिंक अगर आप ग्रोथ रेट देखें 2016 से 2022 का विच इज़ 363.5 टाइम्स, तो पर एनम अगर ग्रोथ रेट भी आप निकलवा लें तो आई थिंक 1230 अगर आप नहीं भी अचीव करें तो उसके नेड़े टेढ़े आप अचीव कर सकते हैं। नेट मीटरिंग 2 के नज़र नहीं आ रहा कि हमारी ज़रूरत अभी आप मतलब शुरू भी नहीं हुए, अब उसकी कैपेसिटी को मीट करना तो पूरी होना तो बहुत दूर की बात है। बट आई वुड आल्सो से कि इसके साथ साथ हमें बेस के ऊपर भी काम करना चाहिए और एनर्जी स्टोरेज को शामिल करना चाहिए। रीज़न बीइंग के जो ज़्यादातर लोड ग्रिड के ऊपर पड़ रहा है वो रात के वक्त पड़ता है और जिसकी वजह से रात में लोड शेडिंग भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गर्मियों में अक्सर ग्रिड के इशूज़, पावर आउटेजेस, इट इज़ अ रूटीन। तो टेक्नोलॉजी अभी तक उस स्टेज पे पहुंची नहीं है बेस की कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी एक वाइड मैसेज के लिए हो जाए। But yes, BESS is very important and this has to be implemented। हमारी कुछ regulations में अगर उसकी कुछ incentivize कर दें, ड्यूटीज़ उस पर कम करें बैटरीज पे और उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग को हम फोकस करें तो इट विल हेल्प टू रिड्यूस द लोड फ्रॉम द ग्रिड एंड जो बिजली हम सुबह के वक्त बना रहे हैं उसी को स्टोर करके हम शाम के वक्त जो पीक आवर्स हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बातें हुई और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेन इसमें जो है गवर्नमेंट का किरदार आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इतना नहीं। खासतौर पर जितनी बातें इन्होंने की FBR के इशू, टैक्सेस के इशू और प्री शिपमेंट डॉलर के इशू, वैसे तो वो फेडरल गवर्नमेंट के इशू हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो हम तो फैसिलिटेट करते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई भी इशू प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लेवल पे एनर्जी जितने भी प्रोड्यूसर है या जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनको ना आए। लेकिन बहरहाल ज़्यादातर प्रॉब्लम फेडरल गवर्नमेंट के हैं, ख़ासतौर पर सेल टैक्स का इशू जो हर रोज़ बढ़ता है और घटता है, प्री शिपमेंट के इशू, इंस्पेक्शन के इशू और ये जो डॉलर्स के इशू है, ये सब बेसिकली पर्टेन टू फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन मेरी कुछ तजवीज़ है
जो इस वक्त यहाँ पे कुछ इम्पोर्टर्स भी बैठे हुए हैं और जो सप्लायर भी हैं कि ये जो प्री शिपमेंट वाली जो कंडीशन है, तो आप लोग क्यों नहीं अपने अंदर ये महारत पैदा करते? आप ही में से कोई एक आदमी आए जो सर्टिफिकेशन करे और पेश करे गवर्नमेंट को कि हम प्री शिपमेंट करेंगे। मेरा अपना ओपिनियन ये, आप ही लोगों में से कोई एक आदमी निकले और वो निकले कि ठीक है जी, मैं बाहर से अपनी एक टीम को भेजता हूँ, वहाँ से सर्टिफिकेशन, ताकि कोई भी जहाज़ सोलर का यहाँ उतरे तो हमारी कंपनी, हमारी पाकिस्तानी कंपनी उसको शिपमेंट करे। मेरा अपना ओपिनियन है। सबसे इम्पोर्टेंट ये, चूँकि आप लोग हैं यूज़र, आप लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आप लोग कोई भी एक पार्टी, आप अपने कुछ आदमियों को ट्रेन करें, बाहर भेजें, उनसे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करवाएं, उनसे सर्टिफिकेशन करवाएं और वो यहाँ का रजिस्टर्ड हो, और हम आपको सपोर्ट करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट से हम आपको वो शिपमेंट वाली जो कंडीशन है वो उस कंपनी को दिलवाएंगे। We are a different kind of a school. We do not teach academia basically. What we teach is, we are an innovative school. Students are solar wala. We have given them the name of solar, and what they do is they daily watch a TEDx video about solar energy, and our concept is that after watching a video about solar energy, after 4 years of graduation, what knowledge they will have about solar energy after doing metric will be incomparable to any PhD doctor. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबीना फराज है। बेसिकली मैं इन्वायरमेंटल जर्नलिस्ट हूँ और 20 साल से मैं इन्वायरमेंट पे ही लिख रही हूँ, काम कर रही हूँ। तो अभी आप लोगों की जो डिस्कशन थी वो ज़्यादातर आपके मैन्युफैक्चरर या इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थी कि गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। तो यहाँ मेरे 2 कमेंट्स हैं। एक तो ये कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, जब भी सोलर की तरफ जाना चाहते हैं तो वो साथ में एक बड़ा इशू खड़ा हो जाता है। लोग कहते हैं वो बैटरी का मसला होगा, बैटरी का ये मसला है, वो इतनी महंगी होती है, ये होता है। तो आम लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट से आपको तमाम मराहत मिल सकती हैं अगर पब्लिक में इसकी एक्सेप्टेंस हो जाए। जितना ज़्यादा लोग इसकी तरफ आएंगे, गवर्नमेंट को मजबूरन सारी आपको सहूलतें देनी पड़ेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। सारा दिन की बहरहाल एफ़र्ट्स और मुशक्क़त और पार्टिसिपेशन के लिए मैं आप सबका ख़ास तौर से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और आज के हमारे यंग पैनलिस्ट ख़ास तौर से और हमारे सेक्रेटरी एनर्जी अबू बकर अहमद मदनी साहब और इरफान साहब और दूसरे पैनलिस्ट जो यहाँ मौजूद हैं, मैं ख़ास तौर से उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि वो आएँ हमेशा और हमारे इवेंट्स में और अपने मतलब ख़यालात से हमें नवाजते भी हैं। दूसरा ये है कि उस पर एक अच्छी डिस्कशन भी क्रिएट होती है। तो बहरहाल ये कि पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं सोलर एनर्जी का मुस्तकबिल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रोशन है। जो मसले मसाइल हैं, मामलात हैं, पॉलिसी हैं, वो तो खैर अब जो है ना मसला होते हैं, थोड़ी सी रुकावटें। लेकिन आप ये देखें कितनी तेज़ी से गुज़िश्ता 5 साल में सोलर ने अपनी एक जगह बनाई है और इंशाल्लाह आगे नेपरा और गवर्नमेंट की अगर कोशिशें रहीं तो मेरे ख्याल है आगे चल के सोलर ही रहेगा। इसके बाद से ना जो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि बिजली के बिलों को इतना बढ़ा दिया जाए कि लोग मजबूरन सोलर पे आते चले जाएं और बिजली के अपने अखराजात को कम करने के लिए। तो बहरहाल मदनी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपके डिपार्टमेंट ने हमेशा बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, आपकी हमेशा पार्टिसिपेशन हमारे साथ रही है। आज मिनिस्टर साहब भी यहाँ थे, एनर्जी डिपार्टमेंट के लोग भी हमारे साथ थे और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए हैं, जो आपने मसाइल सुने हैं, इनके हल के लिए जो भी आपसे एफ़र्ट्स हो सकती हैं और वो ज़रूर करें। और सिंध में बहरहाल चूँकि काफ़ी बड़ी अचीवमेंट आई है, बड़ी डेवलपमेंट आई है सोलर पे और रिन्यूएबल पे, तो उसमें मतलब आपका किरदार इंशाल्लाह और बेहतर जो है वो होगा। थैंक यू वेरी मच।